Okay. So this is the first question that we are going to solve about what we have done in the previous classes, बच्चों. So you can see this sodium hydrogen carbonate is found in the baking soda. जो घर में baking soda हम लोग use करते हैं, उसके अंदर actually sodium hydrogen carbonate होता है. When sodium hydrogen carbonate is heated, it forms three products. You need to keep remember whenever you are heating any of the substance and it is going to be break down into 2 or 3 substances, it is actually decomposition. And because you are doing this decomposition by heating, so you can call it as thermal decomposition reaction. So this is one of the type of reaction, which is thermal decomposition reaction. You can call it thermal decomposition, right, if you want to. Okay, so this is not the matter right now. We are talking about moles. So let's talk about B. Calculate the volume of carbon dioxide. What we need to find out, bacho? Volume of carbon dioxide, right, at room temperature and pressure, because we know that 1 mole of any gas at room temperature pressure always have 24,000 centimeter cube volume. And when 12.6 gram sodium hydrogen carbonate heated using the following step. Now you can see this, what is given to us. First of all, you need to keep remember what is given to us. This is the given condition. So you need to find out the moles of this, right? And what is the required condition? This is the required condition. This is the one which is required from you. वो आपको sodium hydrogen carbonate देकर आपसे volume of carbon dioxide जानना चाहते हैं. This is what stoichiometry. एक चीज दे दी, दूसरी चीज निकालनी है आपने. Now let's start. What they are asking for? They are asking for determine the mass of 1 mole of sodium hydrogen carbonate. So we know that. What is the mass of 1 mole? Mass of 1 mole is actually the molar mass of the substances or the atomic mass of atoms and the molecular mass of molecules, right? So right now they're asking for sodium hydrogen carbonate. So they are saying calculate the molecular mass of this. So we know that's sodium hydrogen carbonate. So we know the rule number 1, whenever element changes, we need to place plus over there, right? And the carbon is 12, so we need to plus over here. And also rule number 2, if we have a number in the subscript, so we need to multiply that number with the element which is just before of that. So it is 24 plus 12 plus 48. It is 60, 80, 84. So the answer of first part is 84. Right, bacho, or not? Yes, sir. Great. Then Yes, what we need to do in the next part, calculate the number of moles of sodium hydrogen carbonate used. Yani ki kitna used hua. You can see this. Yes, this is the amount of sodium hydrogen carbonate which is using right now over here. So we can find out the number of moles by using the formula mass over MR. As we have 12.6 gram of sodium hydrogen carbonate, so we must need to divide it by the MR of sodium hydrogen carbonate, which is 84. So what should be the answer of this, bacho? 0.15. 0.15, not 15. 1.5. Right? Yeah, 0. Okay, then later on, determine the number of moles of carbon dioxide formed. Now you just need to see this, that you are using 12.6 grams of sodium hydrogen carbonate. So they are asking how much carbon dioxide produced. It means from the moles that you are using right now, these moles are going to form how much amount of carbon dioxide, right? Let's see. Let's see. Okay, so we have sodium hydrogen carbonate, which is given to us, right? And we need to have the volume of carbon dioxide. This is required condition. So in the equation, you can see this, it is 2:1. So right now you can see this in the equation is saying that if you have 2 moles of sodium hydrogen carbonate, so it must form 1 mole of carbon dioxide. But how much right now we have? We have 0.15. So how much carbon dioxide it will produce? 0.075. So, 0.075. all right. So we need to multiply, cross multiply them, and then it shows 0.15 divided by 2. So the answer would be 0.075, right? 0.75. All right. Yes. Thank you. Thank you so much, bacho. Then the next part is saying calculate the volume of carbon dioxide at room temperature and pressure. You can see this. They are asking for decimeter cube. Ghana. You can see this. They are asking the volume in decimeter cube. So we know that if we want to find out the volume of any gas in the decimeter cube, so we must need to multiply the gas with 24. So right now we have 0.075. So we need to multiply it with 24. So what should be the answer of this, bacho? 1.8. 1.8. 1.8 decimeter cube. Absolutely right, बच्चों. ठीक हो गया. बात समझ में आ गई आप लोग के? कोई चीज जो ऐसी समझ में ना आई हो. So this is question number 2 that we need to solve, बच्चों. You can see this. When solid copper 2 nitrate is heated, you can see this. Copper 2 nitrate हमने क्यों लिखा है? क्योंकि copper is transition metal, so we need to mention the oxidation state of copper.
is heated, copper 2 oxide, nitrogen dioxide and oxygen are formed. ठीक है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये तीन चीजें बनेंगी, and we know that this is the breaking of compound by heating, so it must be thermal decomposition, right? So the next thing is calculate the volume of nitrogen dioxide. Again, they are asking for volume, right? At room temperature and pressure when 4.7 grams of copper nitrate is heated. And they already gave us the steps, so it would be easier for us now, right? Calculate the mass of 1 mole of copper nitrate. So we need to find out the molecular mass of this compound, which is copper plus 188. nitrogen plus oxygen into 3 into 2, right? It is 64. It is 14 plus 16 into 3 would be 48 into 2. So what is the answer you have? It is 188. 188. 188. Very good, बच्चों. Next, let's move on towards the next one. Calculate the number of moles of copper nitrate used. तो ये जो vocabulary यूज कर रहे हैं, ये जो statements यूज कर रहे हैं, इससे आपको थोड़ी बहुत बात समझ में भी आ रही होगी. क्या बात समझ में आ रही होगी? वो ये कह रहे हैं कि कॉपर नाइट्रेट के एक मोल में 188 ग्राम्स होता है. दैट्स फाइन. अब वो कह रहे हैं कि कितने मोल्स यूज हुए, यानी कि 4.7 ग्राम यूज हुए हैं, तो आपको इसके मोल्स निकालने. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे भाई? 4.7 is divided by 188, which is going to give you the moles of copper nitrate used. क्या आंसर आया बच्चों इसका? 0.025. 0.025. 0.025. Very good. You all are champ, mashallah. Very good. Determine the number of moles of nitrogen dioxide formed. Now, हमारे पास copper nitrate के moles मौजूद हैं बच्चों, and we need to find out the moles of nitrogen dioxide. And according to the equation, it is 2:4. यानी कि if you have 2 moles of copper nitrate, so it must form 4 moles of nitrogen dioxide. But right now we have 0.25 moles. So how much it is going to form nitrogen dioxide? It's quite simple. It is going to be 0.05. 0.05. साफ नजर आ रहा है. 0.05. यस, आप इक्वेशन को देखो तो इट्स ऑब्वियस फॉर यू बच्चों कि अगर आपके पास 2 मोल्स कॉपर नाइट्रेट था तो 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, मतलब डबल. अगर आपके पास 0.025 होगा तो डेफिनेटली डबल बनेगा, एंड द डबल ऑफ 0.25 इज 0.05, राइट बच्चों, और नॉट? Yes, sir. And it's now simple. When we have moles, so we can move anywhere. If we have moles, so we can move toward mass, we can move towards the volume of the gas, we can move anywhere if we have moles. So right now we have moles, and we need to find out what the volume of the gas in the decimeter cube. So we need to multiply it with 24. So we can find out the volume of nitrogen dioxide form. So it would be 1.2. moles 1.2. 0. Decimeter cubes. Yes, so it would be 0.05 1. into 24 will give you 1.2 decimeter cube volume of the nitrogen dioxide. Right बच्चों? जी सर. Yes, sir. देखो बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेशन की जाती है इंडस्ट्रीज में भी. ठीक है ना? अब फॉर सपोज आई जस्ट आस्क माय इंडस्ट्री कि मैं वहां गया, मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे 1.2 डेसीमीटर क्यूब जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए, सो काइंडली ये मेरे लिए बना के मुझे दे दें. तो ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे उल्टा करके ना. पहले वॉल्यूम से मोल्स निकालेंगे, मोल्स से रिलेशन लगाएंगे, रिलेशन लगाने के बाद मास निकालेंगे, और मास को निकाल के हीट कर देंगे, तो उनके पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी वो 1.2 डेसीमीटर क्यूब होगी. तो इंडस्ट्रीज में इसी तरह का कैलकुलेशन किया जाता है ताकि आपको आपके रिक्वायर्ड वेरिएबल्स मिल सके, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द इंडस्ट्रीज. मैं उन इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ जहां पर इंडस्ट्री में सामान बनता होगा. डेफिनेटली मैं अगर इंडस्ट्री में जाके बोलूंगा मुझे 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगी, वो मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, बोला भाई इंडस्ट्री है, ये कोई कबाड़ खाना थोड़ी है, आप 1 डेसीमीटर क्यूब लेने आ गए. इंडस्ट्री वाले बनाते हैं टन्स के अंदर, तो डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द टन्स एज वेल. इफ यू आर एबल टू वर्क आउट फॉर ग्राम्स, यू कैन वर्क आउट फॉर किलोग्राम्स, यू कैन वर्क आउट फॉर टन्स. सो डेफिनेटली जब आप बहुत अच्छे हो जाते हो कैलकुलेशन में मोल्स की, तो आपको उस जॉब पे रखते हैं कि भाई तुम कैलकुलेशन करके दोगे, बनाने वाले बना लेंगे. ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी. राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम नाइट्रेट. अब वो कह रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा. डेफिनेटली जो ऊपर बना हुआ है यही होगा, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ the syllabus of moles right now, so I am just skipping this. So let's move on towards the next question. Third वाला I think I'm done. अब जरा देखिए इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द periodic table is the method of classifying elements, right? PCl5 reacts with lithium fluoride to form LiPF6, lithium phosphorus fluoride. Okay, the equation is already given to us. Calculate the mass of lithium fluoride needed. अब हम ये भी निकाल सकते हैं. फॉर सपोज आप में से कोई शख्स मेरे पास आया है और वो कह रहा है कि उसको 3.04 ग्राम्स लिथियम फास्फोरस फ्लोराइड चाहिए,
तो अब मुझसे जो लड़का बनाएगा वो ये पूछ रहा है सर कि अगर 3.04 ग्राम्स मैं लिथियम फास्फोरस फ्लोराइड बनाऊं तो हाउ मच लिथियम फ्लोराइड वी नीड टू ऐड इनटू द कंटेनर सो इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म 3.04 एग्जैक्टली लिथियम फास्फोरस फ्लोराइड। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं कैलकुलेशन कुछ ऐसे करूंगा, देखो मैं बोलूंगा सबसे पहले तो मुझे निकाल लेने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम फास्फोरस फ्लोराइड दैट यू वांट, ठीक है ना। सो वी कैन फाइंड इट आउट बाय मास ओवर MR, right? And we can find out the moles you required. Mass you required is 3.04 and the MR we have is 152. So what should be the answer of this, bacho? 0.02. 0.02. Very good. And after that, you can see this reduce the number 0. of moles of lithium fluoride. So I just write the balanced equation for this. और मैं देखूंगा कि इसके पास 1:6 का relation है. For suppose So if times you 6. want lithium phosphorus fluoride and you want to calculate कि how much lithium fluoride should we use. So it is 1:6 का relation है and you have right now 0.02 moles to form. तो इसके लिए आपको कितना lithium fluoride चाहिए होगा? Then you need to cross multiply and the answer is 0.12. 0.12. Absolutely right. The 6 times of your answer, right? And now you can find out the mass of lithium fluoride needed. And it is what? We know that once we have 0. moles, we can move anywhere. So Mass. now we multiply with MR. अच्छा ये बात याद रखिएगा कि moles आपने लिथियम फ्लोराइड के यूज किए हैं तो MR भी यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड का यूज होगा। ये ना हो किसी और के मोल्स के साथ किसी और के MR को मल्टीप्लाई करा दे तो डेफिनेटली आंसर गलत आएगा इफ यू आर यूजिंग द राइट फार्मूला एज वेल। तो याद रखें जिसके मोल्स हैं उसी के MR से मल्टीप्लाई कराएं, जिसका मास है उसी के MR से डिवाइड कराएं, so it would give you the right answer. So right now the moles of lithium fluoride is 0.12 and the MR of this is 7 plus 19. 7 plus 19 gives you 26. Exact वाली नहीं मान. So the answer is 3.12 3.12. 1.2. grams. Absolutely right, बच्चों, माशाल्लाह, good job, very good. सर अगर हम I'm ग्राम्स pretty much ले लिखे happy होते for तो you. पे क्या मार्क जाता? नहीं ऐसा नहीं We है, don't यूनिट write- यूनिट का अच्छा, मार्क okay. नहीं है यहाँ पर इस वक्त।